everybody who is struggling in life would relate to this, but your subconscious mind is aware. Hi guys, I'm Anusha. I'm a medical student studying in my final year, soon going to give my final year exams. So, every medical student would relate to this, and obviously, everybody who is struggling in life would relate to this. It's a normal question for us that what are we chasing in life? What is that one thing which is, targeting us, which is rooting us to go in life ahead with something? आज अगर मैं मेहनत कर रही हूँ या मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैं क्या चेज़ करना चाहती हूँ. आई चोज टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई एम चेजिंग समथिंग एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. एक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे कि एन एवरेज मिडिल क्लास बच्चा विद द सिंपल टॉय जो बहुत खुश हो जाता है जब उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई टॉय लेके आते हैं, और वहीं पे एक बहुत ही रिच क्लास फैमिली का बच्चा जिसके लिए फ़ोन लेके आते हैं पेरेंट्स, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो खुश नहीं होता. वो सोचता है कि यार ये क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ गिफ्ट इज़ दिस, आई वांटेड एन iPad or maybe something more expensive. Now, who is the better one? I think somebody who gets happiness, somebody who is happy doing something would not really chase anything. What I mean is that all of us, if we are on a right path, mark my words, all of us, if we are on a right path, are chasing happiness. And I'll tell you what a wrong path person will be chasing. But if I am here making my career in being a doctor, that's not because it's something which is meant for me and it's destined for me. Not everyone would believe that, obviously. It's something that makes me happy as a human. To heal people, to treat people is something that makes me happy. What are we earning all of this for? What is this luxury all for? वो सब मुझे क्यों चाहिए? क्या लोग पहले भी गुजारा नहीं करते थे? जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब भी लोग इस चीज़ के बिना भी गुजारा करते थे. तो what is changed is our criteria of being happy. So now let me give you this one thing कि हम लाइफ में हैप्पीनेस को चेस करते रहते हैं जबकि हैप्पीनेस तो हमारे अंदर से आनी चाहिए. इट्स लाइक वी आर trying to get immunity from some sort of medicine when it should come from within, and we are always dependent on that medicine to prevent an infection. मैं हर महीने जाकर के वो दवाइयाँ खरीद के लाऊंगी. क्यों? Because I'm chasing for it. It's not something that I can get on my own with my own body. So ये पूरा जो चीज़ है ना वो परसेप्शन का है कि what are we chasing in life is peace and happiness. अब मैं उनकी बात करना चाहती हूँ जो एक गलत पाथ पे हैं. People who are on a wrong path, हम एक करियर बना के, एक सिक्योर फ्यूचर बना के, एक परमानेंट, जब तक हम जीवित हैं, जब तक वी आर लिविंग, हम तब तक के लिए अपने लिए हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हैं. But for somebody who is into bad habits, who's going on a wrong path, who's into any sort of addiction, like दारू बहुत पीता है या स्मोक करता है, all of that is done for pleasure. There is a huge difference between happiness and pleasure. Pleasure is something that you get temporarily out of certain thing. मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को प्लेजर गलत चीज़ से मिलता है. प्लेजर इज़ समथिंग यू कैन गेट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे मुझे डॉग्स को फीड करने में बहुत प्लेजर मिलता है, बट द प्लेजर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दैट डोपामीन बूस्ट जो आपको गलत चीज़ों से आता है. और देखा जाए तो वो प्लेजर आप इसलिए सीख करते हो क्योंकि इनडायरेक्टली आप हैप्पी होना चाहते हो. But your subconscious mind is aware that you're not happy.
but your conscious mind is saying that I need to do something about it, and you choose the wrong path to gain pleasure instead of happiness. So what we are chasing is happiness, and happiness always comes from within. You never chase for happiness from the external sources. इसीलिए हम चेस करते रहते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ में है ना कुछ भी करना बंद कर दो, अगर आप खुश हो तो स्टॉप लिविंग. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपके लाइफ में लग्जरीज या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहते हो, विच यू एस्पायर टू डू, और आप वो नहीं कर रहे हो, तो इट्स अनफॉर्चुनेट. If I want to become a doctor and that's something I want to do, that's something what I feel is my passion, I should do it. It will increase the intensity of being happy and grateful for my life, isn't it? So yeah, that's about the video. I think that's something I had to think a lot of times before video recording, because it's something very subjective. This was my opinion. If you have any difference of opinion or anything to add, you can feel free to add, and I'll see you guys in the next one. Thank you.